बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पार्ट 2। ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक है स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन है, पहले हम बात करते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के बारे में। सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स। क्वेश्चन है, द सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय विच डिपार्टमेंट्स? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन है, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड्स टेक्स प्लेस इन सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स। सॉल्व बनता है, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स आर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर हाइब्रिड सीड्स। क्वेश्चन है, the seed multiplication farms has been established for which crops? The seed multiplication farms has been established for which crops? Paddy, maize, oats, oil seeds, pulses, saffron. Question है, the seed multiplication farms are located in इसका Pulwama, Shippian, Bandipora. The seed multiplication farms are located in इसका Pulwama, Shippian, Bandipora. बहुत important question है। Where are seed multiplication farms located? इसका Padgampora, Pulwama, Olupora, Shippian, Markondal, Bandipora. तो आपने में the seed multiplication farms are located in 3 districts, that is Pulwama, Shippian and Bandipora. Question and the potato development farm is located in इसका Gurez. The potato development farm is located in Gurez and Gulmarg. Question है, APEDA stands for इसका Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. बहुत इंपॉर्टेंट। APEDA stands for इसका Agricultural Processed Food Products। तो APEDA stands for Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. Question है, what is the main aim of APEDA? APEDA इसका the main aim of APEDA is to develop industries related to processing of agricultural products for the purpose of exports. Question है, in Jammu and Kashmir the APEDA has launched various export zones. Question बनता है, name various agri export zones of Jammu and Kashmir. सवाल बनता है, name agri export zones of Jammu and Kashmir. इसमें paddy export zone, apple export zone, walnut export zone. तो आपने याद रखना होगा, the export zones have been developed for which crops? इसका paddy, apple, walnut. ठीक है ना। तो आपने which are the agri export zones of Jammu and Kashmir? इसका paddy export zone, apple export zone, walnut export zone. क्वेश्चन है, द पैडी एक्सपोर्ट जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन इसका सही जवाब है जम्मू, किश्तवाड़, बारामूला, कुपवारा, बडगाम एंड श्रीनगर। सवाल बनता है, द पैडी एक्सपोर्ट जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? इसका जम्मू, किश्तवाड़, बारामूला, कुपवारा, बडगाम एंड श्रीनगर। क्वेश्चन है, द एप्पल एक्सपोर्ट जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवारा, कठुआ, पुलवामा। क्वेश्चन है, द वालनट एक्सपोर्ट जोन्स आर लोकेटेड इन इसका सॉरी पहले आपने द पैडी एक्सपोर्ट जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? इसका जम्मू, किश्तवाड़, बारामूला, कुपवारा, बडगाम, श्रीनगर। क्वेश्चन है, द एप्पल एक्सपोर्ट जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवारा, कठुआ, पुलवामा। क्वेश्चन है, द वालनट एक्सपोर्ट जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? श्रीनगर। द वालनट एक्सपोर्ट जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवारा, कठुआ, पुलवामा, डोडा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी। क्वेश्चन है, ATMA स्टैंड्स फॉर इसका सोचो में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट। ATMA दैट इज आत्मा इन एग्रीकल्चर स्टैंड्स फॉर ATMA इन एग्रीकल्चर स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ATMA स्टैंड्स फॉर इसमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ what is the main objective of ATMA? ATMA that is agricultural technology management agency. इसका the main objective of ATMA is the transfer of latest agricultural technology to farmers. ठीक है ना। तो आपने याद रखना under which क्वेश्चन ATMA stands for ATMA that is ATMA stands for agricultural technology management agency. क्वेश्चन है, what is the main objective of ATMA? the main objective of ATMA that is ATMA that is agricultural technology management agency is transfer of latest agricultural technology to farmers. For this the ATMA established farm the ATMA established farm information advisory centers in all blocks of the chosen districts. ठीक है ना। FIACS stands for the FIAC stands for Farm Information
एडवाइजरी सेंटर, ठीक है ना। FIAC स्टैंड्स फॉर फार्म इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर। सवाल बनता है नेम द सेंटर्स विच वायर एस्टेब्लिश्ड अंडर आत्मा, इसका सोच में फार्म इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर्स। Initially, 5 districts were chosen for FIAC, that is Farm Information Advisory Centers, ठीक है ना। दैट इज अनंतनाग, बड़गाम, कुपवारा, लेह एंड कारगिल। तो आपने नेम द डिस्ट्रिक्ट्स वायर फार्म इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर्स वायर एस्टैब्लिश्ड। बहुत नेम द डिस्ट्रिक्ट्स या इन विच डिस्ट्रिक्ट्स द फार्म इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सेंटर्स वायर एस्टैब्लिश्ड, इसका सुझाव है अनंतनाग, बड़गाम, कुपवारा, लेह एंड कारगिल। क्वेश्चन है BKVY RKVY स्टैंड्स फॉर, इसका सुबह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो आपने द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज रिलेटेड विद, इसको एग्रीकल्चर। बहुत क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज रिलेटेड विद, इसको एग्रीकल्चर। बहुत द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज रिलेटेड विद, इसको एग्रीकल्चर। बहुत क्वेश्चन है द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज associated with which field, इसको एग्रीकल्चर। बोलते हैं द राष्ट्रीय कृषि विकास is associated with which field, इसको एग्रीकल्चर। क्वेश्चन है द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना was launched in, इसको 2007। The राष्ट्रीय कृषि विकास aimed at achieving 4% annual growth in the agriculture sector during 11th year plan by ensuring a holistic development for agriculture and allied sectors, ठीक है ना। क्वेश्चन है नमसा NMSA स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बहुत NMSA स्टैंड्स फॉर, इसका सुझाव है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन है द NMSA स्टैंड्स फॉर, इसमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। The NMSA has been formulated for, NMSA stands for National Mission for Sustainable Agriculture. NMSA has been formulated for enhancing agricultural productivity, especially in rain-fed areas, focusing on integrated farming, water use, efficiency, soil health management, and resource conservation. So, the National Mission for Sustainable Development, NMSA stands for National Mission for Sustainable Development. What was the aim of NMSA? The NMSA has been formulated for enhancing the agricultural productivity, especially in rain-fed areas, focusing on integrated farming, water use efficiency, soil health management, and resource conservation. Question MIS stands for Market Intervention Scheme. बहुत important question है। MIS stands for, इसका सब है Market Intervention Scheme. The market intervention scheme was started in 2015, ठीक है ना। Under this scheme, the state government buys the crops. तो under which scheme the state government buys the crops so that the export price of agriculture products can be stabilized, इसको MIS। What is market intervention scheme? इसको सुबह the market intervention scheme is a scheme in which state government buys the crops so that the export price of the agriculture products can be stabilized। What is market intervention scheme? So the market intervention scheme is a what is market intervention scheme? The market intervention scheme is a scheme in which state government buys the crop so that the export price of the agriculture products can be stabilized. Question है तो what is the main aim of market intervention scheme? इसका सुनिए stabilization of export price stabilization या stabilization of export price. Question है तो आपने इसमें under market intervention scheme the state government buys the crop so that the export price of agricultural products can be stabilized. The products are then exported to international markets. This project is launched on pilot basis in Sopore in Baramulla district and Shupian, Dachipura in Anantnag district. The market intervention scheme. Name the districts in which market intervention scheme has been developed. इसका सुझाव है Baramulla, Anantnag, Shupian. तो आपने market intervention scheme has been launched in which districts of Jammu and Kashmir? बोलते the market intervention scheme has been launched in which districts of Jammu and Kashmir? इसका सुझाव है Baramulla, Shupian, Anantnag. NAM in agriculture stands for National Agriculture Market. बहुत important question है। NAM stands for National Agriculture Market. This scheme was launched in Shara. What is the aim? What is the aim of NAM? NAM stands for National Agriculture Market. Question है what is the aim of
what is the aim of national agriculture market? इसका सुबह the aim of national agriculture market is to provide a digital platform for agricultural commodities. बहुत ही important question है. NAM stands for national agriculture market. Question है what is the aim of national agriculture market? इसका सुबह the national agriculture market provides digital platform for agricultural commodities. Question है अंडर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनल मंडीज और लिंक डिजिटली. तो आपने याद रखना इसमें द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट the national agriculture market तो आपने under national agriculture market तो आपने the national agriculture market provides a digital platform for agricultural commodities. Under national agricultural market 4 important terminal mandis are linked digitally and they are Narwal, Jabalpura, Parampura, Sopur. सवाल इस तरह बनता है name 4 mandis which have been linked digitally. बहुत important name 4 terminal mandis which have been linked digitally. बहुत important question है name 4 mandis in Jammu and Kashmir which has been linked digitally. इसके बाद Narwal, Jabalpura, Parampura, Sopur. These 4 mandis are also doing electronic auction. अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में. द जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. ठीक है ना. द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स द जम्मू एंड कश्मीर ऑफर्स स्कोप फॉर कल्टिवेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कवरिंग ए वेराइटी ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स लाइक apple, pear, peach, plum, apricot, almond, cherry and subtropical fruits like mango, guava, lychee, etc. ठीक है ना. नेम इंपॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट्स इसको सब एप्पल, पियर, पीच, पलम, एप्रिकॉट, एलमंड्स, चेरी. नेम इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में मैंगो, गोवा, लीची एट्सट्रा. क्वेश्चन है द हॉर्टिकल्चर emerges as the fastest growing sector. The horticulture emerges as a fast growing sector contributes about 77 to 8% of the economy. ठीक है ना. 7 to 8% of the economy and about 40% to the agricultural sector. ठीक है ना. तो आपने ये याद रखना होगा. तो आपने परवाज स्कीम फॉर फार्मर्स इन जम्मू एंड कश्मीर वाज लॉन्च्ड इन 2022. तो आपने ये याद रखना होगा द हॉर्टिकल्चर इज एमर्जिंग एज अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर. ठीक है ना. तो द हॉर्टिकल्चर इज एमर्जिंग एज अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 7 to 8% टू द इकोनॉमी एंड अबाउट 45% टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. द लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और बारामूला. ठीक है ना. तो आपने इसमें विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. बहुत विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूसिंग विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसका बारामूला. क्वेश्चन है द जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स एंड वॉलनट्स इन इंडिया. तो आपने इसमें फैक्ट याद रखना जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स एंड वॉलनट्स इन इंडिया. अब बात करते हैं परवाज स्कीम के बारे में. द परवाज स्कीम वाज what is परवाज स्कीम. इसके सब when was परवाज स्कीम launched. इसको 2022. ठीक है ना. द परवाज और परवाज मार्केट लिंकेज. तो आपने इसमें द परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू सपोर्ट लोकल फार्मर्स बाय फैसिलिटेटिंग द शिपमेंट ऑफ पेरिशेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थ्रू एयर कार्गो. तो आपने थ्रू एयर कार्गो. तो आपने अगर इसमें परवाज क्या है थ्रू एयर कार्गो. तो आपने अगर इसमें द परवाज व्हाट इज परवाज स्कीम इन एग्रीकल्चर. द परवाज स्कीम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू सपोर्ट लोकल फार्मर्स बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थ्रू एयर कार्गो. ठीक है ना. ये आपने याद रखना होगा. The scheme covers high-value perishable fruits and vegetables, including cherry, strawberry, plum, peach, pear. ठीक है ना. इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडी द परवाज स्कीम provides 25% ऑफ सब्सिडी ऑन एयर फाइट चार्जेस. तो एयर फाइट चार्जेस. तो परवाज स्कीम. ठीक है ना. परवाज स्कीम हैज बीन is under which mission. इसके under youth mission. ठीक है ना. under youth mission. Your Parvaz is a J&K's bank scheme for financing young entrepreneurs. ठीक है ना. क्वेश्चन है
जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स एंड वॉलनट्स इन इंडिया। पहले बात करते हैं हम फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। क्वेश्चन है सम इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकॉट, वॉलनट, वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखने हो गए। तो पहले बात करते हैं एप्पल के बारे में। क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लैंड इन कश्मीर is under production of apples। बहुत ही important क्वेश्चन है। How much percent of horticulture land in Kashmir is under production of apples? 80% land। तो आपने बताया around 80% of the horticulture land is in Kashmir is under production of apples। क्वेश्चन है Kashmir is the largest producer of apples in India and which is the main cash crop of Jammu and Kashmir? इसका सही है apple। बहुत ही which is the main cash crop of Kashmir region? बहुत ही which is the main cash crop of Kashmir region? इसका सही है apple। क्वेश्चन है where is Asia's largest fruit mandi located? इसका सही जवाब है Sopore town। क्वेश्चन है the cultivation of apple started from, इसका सही apple। तो आपने sorry, the cultivation of apple started in, इसका सही Sopore town। क्वेश्चन है which has the where is Asia's largest fruit mandi situated? इसका सही जवाब है Sopore। क्वेश्चन है which district is called apple bowl of apple, which district is called as apple bowl of Jammu and Kashmir? इसका Shopian। क्वेश्चन है द फ्रूट मैच्योर्स ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। कुछ लिखते हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन कश्मीर बट इट इज नाउअडेज शोपियान, ठीक है ना। क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट फ्रूट्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका जवाब है एप्पल, पियर, पीच एंड एप्रिकॉट, वॉलनट। क्वेश्चन है क्वेश्चन आपने होगा हाउ मच परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज अंडर हॉर्टिकल्चर? इसको 80%। तो आपने सॉरी हाउ मच हॉर्टिकल्चर लैंड इज अंडर प्रोडक्ट एप्पल, हाउ मच प्रोडक्ट हाउ मच लैंड ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर एप्पल्स? इसका सही है 80%। क्वेश्चन है which region is the largest producer of apple in India? इसको कश्मीर रीजन। क्वेश्चन है which is the main cash crop of कश्मीर रीजन? इसको एप्पल्स। क्वेश्चन है द कल्टिवेशन ऑफ एप्पल स्टार्टेड इन, इसको सही है सोपोर टाउन। क्वेश्चन है वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रूट मंडी लोकेटेड? इसको सही है सोपोर। क्वेश्चन है विच इज नोन एज द एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर? इसको सही है शोपियान। क्वेश्चन है विच इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर? इसको सही है शोपियान। क्वेश्चन है नेम फ्यू वेराइटीज ऑफ एप्पल कश्मीरी एप्पल्स? इसको अमरी, अमेरिकन, त्रेल, सुनहरी, फिरदोस, शीरीन, शालीमार। बहुत ही important क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल्स, नेम इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल्स इन जम्मू कश्मीर। बहुत ही important क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल्स कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर है अमरी, अमेरिकन, त्रेल। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका अमरी, अमेरिकन, त्रेल, सुनहरी, ठीक है ना, सुनहरी, फिरदोस, शीरीन, शालीमार। तो आपने इसमें नेम इंपॉर्टेंट एप्पल वेराइटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरी, अमेरिकन, त्रेल, सुनहरी, फिरदोस, शीरीन, शालीमार एटसेट्रा। क्वेश्चन है द एप्पल मैच्योर्स ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। Baramulla is the largest producer of apple in Kashmir, while as nowadays it is Shopian, ठीक है ना। A new variety Hariman 99 summer zone apple is cultivated in Samba। तो आपने याद रखना इसमें a new variety Hariman 99। तो आपने a new variety of apple, तो आपने a new variety of apple that is Hariman 99 summer zone apple। तो आपने तो आपने इसमें a new variety of apple that is Hariman 99 summer zone apple is cultivated in Sama district that grows in warm temperatures of Jammu region। तो आपने इसमें a new variety Hariman 99 summer zone apple is cultivated in Samba district that grows even in warm temperatures of Jammu region। In Ladakh apples are grown in lower mountain in Ladakh apples are grown in lower mountainous regions of Nubra, Sham and Kargil। क्वेश्चन है pear के बारे में। The Kashmir grows two varieties of pear. Name two varieties of pear in Kashmir grown in Kashmir. So Nak and Williams. तो अपने Nak, Tongue and Williams। तो अपने name two varieties of pears grown in Kashmir. So Nak and Williams।
The pears are grown in cool and humid climate. तो which climate is required for the cultivation of pears? For the growth of pears, which type of climate is required for the growth of pears? Cool and humid climate. Question है, which district of Jammu and Kashmir is the largest producer of pear in Jammu Kashmir? Badgam. तो टंग का चीज़ मेरा बड़गाम. क्वेश्चन है पीच के बारे में. Peach and apricot require cool weather throughout the growing season and low humidity. तो आपने peach and apricot requires. तो what are the climatic conditions required for the cultivation of peach and apricot? What are the climatic conditions? बहुत important question. What are the climatic conditions which are required for the cultivation of peach and apricot? बहुत important. What are the climatic conditions required for the cultivation of peach and apricot? इसका सोचें cool weather and low humidity. Cool weather and low humidity. तो आपने the peach and apricot requires cool weather throughout the growing season and low humidity. तो आपने इसमें याद रखना what are the climatic conditions required for the cultivation of peach and apricot? इसका इसमें cool weather season with low humidity. Question है the peach and apricot are grown in which areas of Jammu and Kashmir? So hilly areas of Kashmir region. The peach and apricot. The peach and apricot are grown in which areas of Kashmir region? इसका सब hilly areas of Kashmir region. Name important varieties of peach. Name important varieties of peach. इसका सब चारमागज, रोगन, शकारपारा. तो आपने चारमागज, रोगन, शकारपारा are the varieties of इसका peach. बोलेंगे चारमरग. तो आपने चारमरग. तो आपने इसमें चारमरग. तो आपने चारमरग, रोगन, शकारपारा are the varieties of peach. Question है the apricot is known as what is apricot known in Ladakh? बहुत क्वेश्चन है what is apricot known in Ladakh? इसमें Rexte Carpo. तो what is apricot known in Ladakh? इसमें Rexte Carpo. बहुत क्वेश्चन है what is apricot known in Ladakh? इसमें Rexte Carpo. The apricot grows in Nubra and Leh. ठीक है ना. Some important varieties of apricot grown in Ladakh are Halman, Norma, Khantri. आप छोड़ो. Question है walnut is also तो Kashmir is also famous for सवाल बनता है पहले which district is the largest producer of peach? इसके बाद कुलगाम. बहुत important question. Which district is the largest producer of peach? इसके बाद कुलगाम. Which district is the apricot is सवाल बनता है which district is largest producer of peach in Jammu and Kashmir? So Kulgam. In which UT the apricot is grown in high production? इसको Kargil. ठीक है ना. Apricot का चीज़ याद बना Kargil उसमें. Question है walnut is also famous for Kashmir is also famous for walnuts. They are even exported to France, Germany, UK, UAE and Netherlands. ठीक है ना. तो आपने याद रखना. Question है name 3 varieties of walnuts produced in Jammu and Kashmir. इसमें Kagzi, Sulaiman, Brazil. तो आपने इसमें name 3 varieties of walnut that are produced in Jammu and Kashmir. So Kagzi, Sulaiman, Brazil. Question है name 3 varieties of walnut cultivated in Jammu and Kashmir. So Kagzi, Sulaiman, Brazil. Name 3 varieties of walnut grown in Jammu and Kashmir. Kagzi, Sulaiman, Brazil. Walnut requires 2 to 3% temperatures throughout its growing season. Question है name the districts which produce great walnut quantity. इसका सब है सवाल बनता है name the districts in which walnut production is high. या which districts of Jammu and Kashmir produce high quantity of walnut? इसका सब कुपवारा, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियन. ठीक है ना. Walnuts are also grown in Leh Ladakh. Question है which district is known as walnut bowl of Jammu and Kashmir? Which district is known as walnut bowl of Jammu and Kashmir? इसका सही है कुपवारा. Question है according to question vegetables the Kashmir Valley is also known for high production of potatoes, turnip, carrot, spinach, tomato, cauliflower, radish, bitter gourd and other vegetables. According to statistics at Kashmir Department of Agriculture, Badgam district is the largest producer of vegetable
ठीक है ना। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, इसको बडगाम। क्वेश्चन है बडगाम इज ऑल्सो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज मिनी पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन ऑल्सो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी पंजाब, इसको विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज मिनी पंजाब, इसको बडगाम। Other districts that produce vegetables are Pulwama, Ganderbal, Kupwara, Anantnag, Baramulla, Bandipora. DRDO helps farmers in Ladakh to grow organic tomatoes and watermelon in Leh and Kargil in summers. Solar greenhouses are developed by DRDO to grow leafy vegetables in Leh. Question है which is the main cash crop of Ladakh, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which is the main cash crop of Ladakh, इसको सही है पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which is the main cash crop of Ladakh, इसको सही है पोटैटो। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स इन जम्मू कश्मीर। नेशनल सैफरॉन मिशन, क्वेश्चन है नेशनल सैफरॉन मिशन इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट रन स्कीम स्टार्टेड इन, इसको 2010, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल सैफरॉन मिशन वाज स्टार्टेड इन 2010। क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल सैफरॉन मिशन, टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन। क्वेश्चन है द नेशनल सैफरॉन मिशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर अंडर विच एक्ट, इसको जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट 2007, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल सैफरॉन मिशन विच स्टार्टेड इन 2010 वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच एक्ट, इसको जम्मू कश्मीर सैफरॉन एक्ट 2007। Question है the national saffron mission implemented in which district, इसको district Pulwama, बहुत इंपॉर्टेंट। the national saffron mission was implemented in which district Pulwama, which is the major saffron producing district of state। Question है saffron park is located in, इसको Dusu in Pulwama, बहुत इंपॉर्टेंट। where is saffron park located, इसको Dusu Pulwama, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। where is saffron park located, इसको Dusu Pulwama। The saffron park, which is located in Duso, Pulwama, provides various facilities to saffron growers। Question है mission for integrated development of horticulture, mission for integrated development of horticulture। The mission for integrated development for horticulture is a central government run scheme, ठीक है ना। it covers the areas during एंड पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आपने इसमें मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर was started by central government in Jammu and Kashmir. The mission for integrated development of horticulture covers the areas during and post production management, ठीक है ना। प्रोसेसिंग मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो आपने इसमें व्हाट इज द एम ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर। तो आपने द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वाज स्टार्टेड इन ऑर्डर टू मैनेज प्रोसेस एंड, तो आपने इसमें द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वाज स्टार्टेड फॉर द production, management, processing and marketing of fruits, vegetables and mushrooms, saffron, flowers and aromatic plants। तो आपने the mission for integrated development of horticulture was started for the production, management, processing and marketing of fruits, vegetables, mushrooms, saffron, flowers and aromatic plants। The mission for integrated development of horticulture is running high density apple plantation scheme at Zanapura, Shipyan and Rangret, Badgaon। अदर स्कीम्स है द मैंगो प्लांटेशन स्कीम, मैंगो प्लांटेशन स्कीम इज लोकेटेड इन, इसको उसमें कोहरू। तो अपने द मैंगो प्लांटेशन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बहुत द मैंगो प्लांटेशन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कोहरू विलेज ऑफ अखनूर। तो आपने अखनूर, ठीक है ना। तो आपने इसमें द मैंगो प्लांटेशन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच एरियाज, कोहरू एंड अखनूर, ठीक है ना। क्वेश्चन है द एप्रिकॉट plantation scheme was implemented in which area, is Hardas। The pecan nut plantation scheme was implemented in which district, is Rajouri, Poonch। Infrastructure development scheme, there are 3 functional terminal markets at Narwal, Parimpura and Sopore and 10 satellite markets। तो आपने इधर इसमें there are 3 functional terminal markets at Narwal, Parimpura। तो आपने इधर फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में क्या है, देयर आर
There are 3 functional terminal markets at Narwal, Parampura, and Sopur, and 10 satellite markets connected through digital technology. The satellites markets are the satellite markets are in at Kulgam, Shipian, Pulwama, Chirari Sharif, Handwara. ठीक है ना? तो आपने देखा in Jammu and Kashmir there are 3 functional terminal markets at Narwal, Parampura, Sopur, and 10 satellite markets connected through digital technology. The satellites markets have been established at Kulgam. तो where are satellite so in which districts the satellite markets have been established इसमें कुलगाम शिपियन पलवामा चिरार शरीफ हंदवारा उधमपुर ठीक है ना अपनी मंडी क्या है these are primary markets in rural areas developed by the state government तो अपनी मंडीज क्या हैं what are अपनी मंडीज are primary markets in rural areas being developed by the state government name important अपनी मंडी इसका सुन में नुनामी कुलगाम ठीक है ना मारी रियासी मंडी पुंछ ठीक है ना टपियाल रिया याब छोड़ो किसान घर क्या होता है किसान घर दीज आर होलसेल मार्केट्स फॉर द फार्मर्स डेवलप एट राजबाग श्रीनगर जम्मू तो आपने वायर इज किसान घर लोकेटेड इसका सुबह राजबाग श्रीनगर व्हाट इज किसान घर इज द होलसेल मार्केट फॉर फार्मर्स अब बात करते हैं वालनट प्लांटेशन स्कीम के बारे में वालनट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सवाल बनता है विच इज द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वालनट ठीक है ना The government is setting up 10 walnut processing units in various districts. The walnut plantation scheme gives loans to set up walnut nurseries and 50% subsidy for walnut plantation. Rajmash cultivation scheme. Rajma cultivation scheme. Rajma cultivation scheme is an important crop grow. तो आपने पहले Rajma cultivation scheme. As we know, the Rajma is an important crop grown in Jammu and Kashmir. 2 clusters for Rajma cultivation are set up in Bhadrawa and Kishtwar. ठीक है ना तो आपने अंदर उसमें name 2 clusters of Rajma cultivation इसका सुझाव है so बोलते हैं name 2 clusters which have been established for Rajma cultivation इसका सुझाव है Bhadrawa and Kishtwar तो आपने Rajma is an important crop grown in Jammu and Kashmir. The 2 clusters for Rajma are established in Bhadrawa and Kishtwar. Bhadrawa Rajma is famous for its taste. तो आपने कहा Bhadrawa Rajma is famous for its taste. Rajma is also grown extensively in Doda and Ramban. Scheme for mushroom development. तो आपने कहा mushroom जो है mushroom has been also given the geotag. ये आपने याद रखना the Gucci mushroom of Jammu and Kashmir has also been given the geotag. The scheme for mushroom development is which type of scheme? इसका state sponsored scheme ठीक है ना question है scheme for mushroom development. The scheme for mushroom development is which type of scheme? इसका state sponsored scheme question है question है बहुत ही question where is first बहुत ही question where is first Indo-Dutch project where is first Indo-Dutch project for mushroom development located बहुत ही important question है where is first Indo-Dutch project for mushroom located बहुत ही important question है where is first Indo-Dutch project for mushroom तो आपने इसमें where is first Indo-Dutch project under scheme for mushroom तो आपने इसमें where is first Indo-Dutch project under mushroom development scheme बहुत ही question है where is first Indo-Dutch project under mushroom development scheme इसका सुबह हारन बड़गाम तो आपने हारन बड़गाम सवाल बनता है where is Indo-Dutch project scheme under तो where is Indo-Dutch project under mushroom development scheme located बहुत ही question where is first Indo-Dutch project under mushroom development scheme located इसको हारन बड़गाम डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बनता है under mushroom development scheme name the 2 initiatives Indo-Dutch project and mushroom research center तो आपने what are the 2 initiatives taken under mushroom development scheme इसका सब Indo-Dutch project and mushroom research center क्वेश्चन बनता है the Indo-Dutch project is located in which district इसका सब हारन बड़गाम क्वेश्चन है mushroom research center is located in इसको लाल मंडी श्रीनगर बोलते हैं the mushroom research center is located in which district श्रीनगर लाल मंडी तो आपने अंदर इसमें name important
नेम इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन अंडर मशरूम डेवलपमेंट स्कीम, इसके उसमें इंडो डच प्रोजेक्ट, कामा मशरूम रिसर्च सेंटर एंड थर्ड जो है वो सब प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लस्टर यूनिट्स। तो आपने पहले वेयर इज फर्स्ट इंडो डच प्रोजेक्ट फॉर मशरूम डेवलपमेंट लोकेटेड, बहुत वेयर इज फर्स्ट इंडो डच प्रोजेक्ट फॉर मशरूम डेवलपमेंट लोकेटेड, इसका सोचिए तो सॉल्व इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, तो वेयर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट इंडो डच प्रोजेक्ट फॉर मशरूम डेवलपमेंट इज लोकेटेड, इसका सोचिए बडगाम डिस्ट्रिक्ट हारन। क्वेश्चन है वेयर इज मशरूम रिसर्च सेंटर लोकेटेड, इसमें लाल मंडी श्रीनगर। वेयर इज मशरूम रिसर्च सेंटर लोकेटेड, इसमें लाल मंडी श्रीनगर। द थर्ड स्टेप टेकन फॉर द मशरूम डेवलपमेंट इज क्लस्टर यूनिट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लस्टर यूनिट्स इन बडगाम, टंगमर्ग, संबल, ठीक है ना। क्वेश्चन है MIS स्टैंड्स फॉर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बहुत क्वेश्चन है MIS stands for market intervention scheme. The market intervention scheme for apple, तो the market intervention scheme in horticulture, तो market intervention scheme, when was market intervention scheme launched? 2020-2021. Question है under what is the aim of market intervention scheme, इसका सुबह it ensures remunerative prices for apples which will increase the income of farmers। तो आप यहाँ देख सकते हैं what is the aim of market intervention scheme, इसका सुबह to give good prices for apples, ठीक है ना। so what is the main aim of market intervention scheme, इसका सुबह to give good price to apples। The procurement of market intervention scheme is done by central procuring agency, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग ग्रीन्स के बारे में। द ऑपरेटिंग ग्रीन्स इज द मिशन इज अंडर विच मिशन, इसके इंडिया ग्रीन मिशन इंडिया, या ऑलरेडी हमने पढ़ा है ऑपरेशन ग्रीन्स। व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स? ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स। तो व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स? व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स, इसका द ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड टू स्टेबलाइज, तो आपने इसमें व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स, इसके द ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स, इसका द ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। The Operation Greens is a scheme started by the central government in 2019. The horticulture crops notified in Jammu and Kashmir are apples, almond, caspium, carrot, cucumber, okra, lemon, etc. ठीक है ना। तो आपने इसमें ऑपरेशन ग्रीन, व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन, इसका द ऑपरेशन ग्रीन इज अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स, इसका द ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ प्रोजेक्ट established to stabilize the price of majority of fruits and vegetables grown in Jammu and Kashmir. The Operation Greens is a scheme started by central government. The horticulture crops notified under Operation Greens are apples, almond, pear, caspium, कैप्सियम, कैरट, कोकम्बर एट्सट्रा। ऑरेंज भी है इसमें आता है, लेमन भी आता है, किन्नो भी आता है। अब बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के, वन प्रोडक्ट के बारे में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ईयर 2020। द वन डिस्ट्रिक्ट वन product will be extended to the next 5 years. Under this scheme, one district selects one fruit or vegetable for cultivation, ठीक है ना। Then inputs for production of that crop, storage, transport and marketing facilities are provided. This scheme is promoted under Atmanirbhar Bharat। तो आपने one district one product scheme is promoted under which, under बहुत important question है, one district and one product, one district one product scheme is promoted under, इसका इसमें आत्मनिर्भर भारत। तो आपने इसमें one district one product is the part of, इसका इसमें आत्मनिर्भर भारत, one district one product is the part of, इसको आत्मनिर्भर भारत। one district one product के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है under one district one product Anantnag has been given, क्वेश्चन है नेम द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ अनंतनाग, इसको फिश बेस्ड प्रोडक्ट, बहुत क्वेश्चन है नेम द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर अनंतनाग, इसको फिश बेस्ड प्रोडक्ट्स, बहुत क्वेश्चन है नेम द स्पेसिफिक, क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बहुत व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसका सही जो है फिश प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन है
what is the specific product for Bandipora? इसको poultry and mutton. What is the specific product for what is the specific product for Bandipora? इसको poultry and mutton. What is the specific product for Bandipora? इसको poultry and mutton. Question है what is the specific product for Baramulla district? इसको एप्पल. पहले आपने को व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसका सब फिश प्रोडक्ट्स. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, इसको पोल्ट्री एंड मटन. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर बारामूला डिस्ट्रिक्ट, एप्पल. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर बडगाम डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर बडगाम डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर बडगाम डिस्ट्रिक्ट, इसको डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर बडगाम डिस्ट्रिक्ट, इसका सही है डेयरी प्रोडक्ट्स. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर डोडा डिस्ट्रिक्ट, ओलायो प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ओलायो प्रोडक्ट्स, ठीक है ना. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर डोडा डिस्ट्रिक्ट, ओलायो प्रोडक्ट्स. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर डोडा डिस्ट्रिक्ट, ओलायो प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, इसका सही जवाब है फिश बेस्ड प्रोडक्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, फिश बेस्ड प्रोडक्ट. क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना. What is the specific product for Jammu district, is with dairy products. What is the specific product for Kathua, is with spices. What is the specific product for Kathua, is with spices. What is the specific product for Kishtwar, so walnut products. What is the specific products for Kishtwar districts for walnut products. What is the specific product for Kishtwar district for walnut products. What is the specific product for Kupwara district, इसका सुझाव है walnut products. What is the specific product for Kolgam district, what is the specific product for Kolgam district with spices and pickles. What is the specific product for Kolgam district with spices and pickles. What is the specific product for Punch, इसका सुझाव है millet based products. What is the specific product for Punch district with millet based products. Question है what is the specific product for Pulwama district, what is the specific product for Pulwama district, is called milk based products. What is the specific product for Rajouri district, is dairy products. What is the specific product for Rajouri district, is dairy products. What is the specific product for Ramban, is honey. What is the specific product for Ramban district, what is the specific product for Ramban district. What is the specific product for Ramban district, is honey. What is the specific product for Riasi, is spices. What is the specific product for Riasi, is spices. What is the specific product for Samba, is mushroom. What is the specific product of Samba, is mushroom. What is the specific product of Shupian, is apple. What is the specific product of Shupian, is apple. What is the specific product of Srinagar, is bakery products. What is the specific product of Srinagar, is bakery products. What is the specific product of Udhampur, is pickles. What is the specific product of Udhampur, is pickles. What is the specific product of Udhampur, pickles. फिर से one district one product को थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं. Which product is specific for Anantnag district? Which product is specific for Anantnag? Which product is specific for Anantnag? So fish based products. Which product is specific for Bandipora? So poultry and mutton. Which product is specific for Baramulla? Is apple. Which product is specific for Badgam? Is dairy products. Which product is specific for Doda? Is olive products. Which product is specific for Gandharbal, fish based products. Which product is specific for Jammu district, is dairy products. Which product is specific for Kathua, is species. Which product is specific for Kathua. Which product is specific for Kathua, is spices. Which product is